Hello students, I hope you are well and doing very great, and welcome back to our YouTube channel. Dear student, in last video we have done up to relation and different type of relation. Now in relation, by using arrow diagram, in relation by using arrow diagram, and you know every relation is subset of Cartesian product, either on A Cartesian B, B Cartesian B, or A Cartesian A. But in relation I will express some arrow diagram, okay, and after that we find, either you can say we find a spatial relation, okay. So if I will write here A, B, C, 1, 2, 3, 4. So I will give A as 1, 2, 3, C as 4. It is also a relation, okay. It is a relation. Now another arrow diagram is A, B, C, 1, 2. It is also a relation. Also a relation. If I will write A, B, C, 1, 2, 3, 4, then it is also a relation. Clear? And if I write A, B, C, 1, 2, 3, 4, it is also a relation. Clear? Dear students, अब आपको ध्यान से देखना है, ये रिलेशन है, इट इज ऑल, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, और इट इज ऑल्सो ए रिलेशन, बट इट इज स्पेशल रिलेशन. इट इज स्पेशल रिलेशन. क्लियर? कैसे है ये स्पेशल? आप देखिए, यहाँ ए को हमने 2 इमेज दिया, यहाँ सी को इमेज ही नहीं मिला, यहाँ ए को 3 इमेज दिया, बट यहाँ ऑब्जर्व करेंगे आप, हमने ईच एलिमेंट को यूनिक इमेज दिया है. ए हैव 2, बी हैव 1, सी हैव 3, एंड ऑल हैव इमेज, या इधर यू कैन से ऑल हैव रिलेशन. तो सच टाइप रिलेशन इज कॉल्ड स्पेशल रिलेशन, इज कॉल्ड स्पेशल रिलेशन. और ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन. क्या नेम देते हैं? फंक्शन. वी कॉल्ड इट फंक्शन. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड मोर अबाउट फंक्शन. ओके, नाउ लेट अस सी. So dear students, we are doing about function. What is function? Function is a spatial relation. Function is spatial relation, and we define it. We will define it. What is function? A function is a mapping from x to y. Function is a mapping from x to y such that each element of x must have a unique image, in y. Okay, and there are some element in y which have no previous. which have no premise.
Now definition of function is, what is function? Function is also a mapping, also a relation, such टाइप से, कौन सी टाइप से? each element of x, ये जो x है अपने पास, इसका जो each element होगा, तो we suppose x and y, we suppose x have a b c, then each element of x means a b c must have, इनका कंपल्सरी है, a unique, only one image. So here if I will write 1 2 3 4, suppose a have image 2, b have 1, c have 3, okay, and there are some element in y which have no preimage. यहाँ देखिए आप y में 4 है और इसको हमने कोई प्रीइमेज नहीं दिया, क्लियर? तो फर्स्ट डियर स्टूडेंट, here x is domain, you know x is domain, y is codomain, and 1 2 3 is image, because 4 किसी का नहीं है, यहाँ पे 4 का कोई रिलेशन नहीं है, तो इमेज इज ओनली 1 2 3. Image is also called range. Image is also called range, and domain is called preimage. Domain is called preimage. Listen and see again. If mapping is x to y, then x is called domain or preimage, y is called codomain, but जिनके साथ रिलेशन हुआ है that is called image or either range. So now according to definition of function, that is a spatial relation. Function is also a spatial relation in which each element of x, suppose a b c, must have a unique image. तो हमने a को 2 इमेज दिया, b को 1, c को 3. There are some element in y which have no preimage. तो y में आप देखना ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको प्रीइमेज नहीं है? 4 को है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ओके, यहाँ हो सकता है, क्लियर? There are some element in y which have no preimage. So 4 5 6 have no preimage. It is the definition of a function, clear? Now some more example about function. Okay, if mapping is a to b, either x to y, कैसा भी हो सकता है, x y. Okay, if I will write a b 1 2 3, a have 1, c have 2, b have 3, is a function or not? Give me your response. Is a function or not? So I hope your answer is it is not a function. Not a function, because you know definition of function, each element of x, either each element of domain have unique image. तो आप देखेंगे d का तो कोई इमेज है ही नहीं यहाँ पे, d have no image, so it is not a function, but it is relation, clear? Now another example, x y a b 1 2 3, a have 1, b have 1. Now my question is a function or not? Is a function or not? I hope your response is it is a function. It is a function because
A have image 1. So A have only unique image, that is 1. B have also 1. क्लियर? A के पास कितने एलिमेंट है? तो आपका आंसर होगा ओनली 1. B के पास कितने एलिमेंट है? आपका आंसर होगा ओनली 1. तो इट मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक इमेज. क्लियर? इट इज यूनिक, सो इट इज अ फंक्शन. बट देर आर सम एलिमेंट विच हैव नो प्री इमेज. तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका प्री इमेज ना हो, देन इट इज फंक्शन. नाउ नेक्स्ट इज, if I will write A, B, C, now my question is a function or not? You will see, आप देखेंगे यहाँ A के पास कितना एलिमेंट है? A have 1, A have 2, B have 3, C have 4. तो आप ऑब्जर्व करेंगे A के पास 2 एलिमेंट हो गए. एक ने 1 को भी लिया, एक ने 2 को भी लिया. क्लियर? बट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इज ईच एलिमेंट हैव अ यूनिक, केवल एक होना चाहिए. बट यहाँ A के पास 2 एलिमेंट हैं, सो इट इज नॉट अ फंक्शन. इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा. क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, A, B, C, D, E is a function or not? Yes, you will see A के पास क्या एलिमेंट है? 0. B have 0, C have 0, D have 0 and E have also 0. Is a function or not? Yes, it is also function because काउंटिंग करना. A के पास कितने एलिमेंट है? 1. B have 1, C have 1, तो all have unique element, unique image, so it is also a function. Clear? Dear students, you know what is function? Function is the mapping from X to Y such that each element of X must have a unique only one image. Clear? And there are some element in Y which have no pre-image. ऐसा हो सकता है. Clear? So now in function, I will write again. If a function is mapping from A to B, you can write also. If it is A, it is B, X, Y, Z, 1, 2, 3, 4. So you know it is domain. A is domain, B is codomain. And domain is also called pre-image, but only related element except 3. 1, 2, 4 is called range, and range have another name is image. Range have another name is image. Now let us see next part. Now if we have one mapping is X to Y, and I will write here A, B, C, 1, 2, 3, 4. So here A, B, C is called independent variable. Independent. And where 1, 2, 3 is called dependent. A, B, C is called independent, and 1, 2, 3 is called dependent. Okay. Now after that, representation of a function. Representation of a function means आप एक function को कैसे कैसे लिख सकते हैं. How will you express or how will you write a function? Okay. Now same as set or relation, first is roster form.
roster or tabular form. Roster or tabular form means if we have given one set A is 1, 2, 3, okay, and another set is 4, 5, another set is 4, 5 and also 6, okay. If I will write कोई स्पेशल रिलेशन आपको गिवन है और उसको मैंने ऐसे एक्सप्रेस किया 1 as 4, 2 as 5, 3 as 6, क्लियर। 1 का रिलेशन किससे है 4 से, 2 का किससे है 5 से और 3 का किससे है 6 से। इट इज ए स्पेशल रिलेशन, क्लियर। तो ऐसे एक्सप्रेस करना राइट एज लिस्टेड इज कॉल्ड रोस्टर और tabular form, roster or tabular form. Second is set builder form. Set builder form. In set builder form you can write as a statement. आप ऐसा क्या स्टेटमेंट बनाएंगे, देखिए यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 4 minus 1 3, 5 minus 2 3, 6 minus 3, okay। तो और स्पेशल रिलेशन इज you can say y minus x is equal to 3, okay। y minus x is equal to 3 where y belongs to b and x belongs to a। तो write as a statement is called set builder form, write as listed as roster or tabular form. Now arrow diagram, in arrow diagram you can write 1 2 3 4 5 6, so you know 1 related with 4, 2 with 5, 3 with 6, clear। So it is example of arrow diagram, clear, arrow diagram। So we have written function in roster form, set builder form, arrow diagram, or by graph also, by graph, by using graph, okay। Suppose if I will take is a function or not, आपको चेक करना है, ऐसे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, इट इज ऑल्सो। तो बाय यूजिंग ग्राफ आपको पहले ग्राफ ड्रॉ करना है और आप ग्राफ से कैसे आइडिया लेंगे, इट इज ए फंक्शन और ए नॉट। और ग्राफ से आप कैसे आइडिया लेंगे, इट इज ए फंक्शन और नॉट। लिसन, इफ आई हैव वन ग्राफ इन दिस फॉर्म, तो यू विल ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन। अगर वर्टिकल लाइन मोर देन 1 पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा देन इट इज नॉट ए फंक्शन। If only single intersection, it is function। or suppose in case of circle, so it is not a function, it can be relation but not a function। अगर आपको कहीं पे ग्राफ गिवन है और क्वेश्चनिंग है इज ए फंक्शन और नॉट, इज ए फंक्शन और नॉट, सपोज दिस टाइप, तो इफ आई विल ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन और इसने इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, क्लियर, then it is not a function। So you can represent a function by using graph also, and one is by using formula। Formula means you can give algebraic equation also, ax plus b, for example y is equal to 2x minus 1। So you can express any function by using algebraic formula also। So dear student, we have studied about relations different ways, then spatial relation, and spatial relation is called function। And what is function we have studied, and the example of function, then representation of function by using roster or tabular form, set builder form, then by using graphical form, arrow diagram,
or by using formula also. And we have studied about domain, codomain, range, image and pre-image. Okay, so in our next video we will study about different types of function. Clear? Stay home, stay safe. Thank you.